Okay, so Unique, firstly tell me, is my voice clear and am I audible and my screen is visible to you? Okay, so let's continue today's session, right? Let's start chapter number 3 of our operating system module. And in our chapter number 3, we are actually studying about the processes and threads, right? This chapter is mix of theory and practicals, right? We have to face practicals in this first section and maybe that in the last, right? These are a lot of practicals for today. Make sure to keep your notebook with your way so that you can make notes whenever you need. And if you need a bit more time, then you should tell me, right? If you need more time. Okay, yeah, there are only two sections which have a lot more practicals. Okay, so can we start from chapter number 3? Okay, so सबसे पहले okay, we are starting with chapter number 3, which is process and threads. Firstly, here we are discuss about what is the difference between program and a process, right? Here you will understand and you can able to apply the psychology or the instinct or the mental map of our computer system which we have created, right? जो मैं आपसे पहले बोला था कि एक मेंटल मैप बनाइए कंप्यूटर का कि हमारे पास एक कंटेनर उस कंटेनर में बहुत सारा स्क्रिप्ट्स रखा हुआ है whenever we run any tool then the shell will go to the place where the script is placed and then it pulls from there and after that वो shell के ऊपर कोड को execute कराता है, right? That scripts are now are known as programs, right? मतलब जो हम अभी तक स्क्रिप्ट्स बोलते आ रहे थे कि पर्टिकुलर जगह पे एक स्क्रिप्ट रखा हुआ है पर्टिकुलर फंक्शन को वर्क करने के लिए, तो वहां पे उसकी जगह अब हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम्स. A program is a passive file containing instructions stored on disk. Passive file means होता है कि वो फाइल रनिंग स्टेट में नहीं आती, राइट? पैसिव फाइल मतलब रुका हुआ, राइट? मतलब just wait. Okay, so एक्चुअली पैसिव फाइल क्या होता है कि हाँ, ये फाइल रनिंग स्टेट में नहीं होती, राइट? जब ये पैसिव स्टेट में है यानी कि स्टैटिक स्टेट में रुका हुआ है, राइट? क्या एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जो कि स्टोर किए हुए बहुत मतलब एक ऐसा फाइल जो कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर किए हुए डिस्क के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स, राइट? मेरे पास फायरफॉक्स अगर इंस्टॉल है, पाइथन इंस्टॉल है, right? Vim installer, processes install, right? So these all are what I have to cut this from here. So these all are what? These all are programs because it is in their static state, right? They are not running. Once we actually execute any program or tell our computer system or our operating system to refer to any script, right, or any program, then when the program change from its passive state to the running state, then we call it as process, right? मतलब जब भी हमारा जो प्रोग्राम है, हमने क्या किया? सबसे पहले कंप्यूटर पे क्लिक मारा, राइट? हमारा जो हमने मेंटल मैप बनाया था उसके हिसाब से. तो हम पढ़े थे कि हर एक कंप्यूटर है उसके बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हर एक सेक्टर्स में पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स रखी हुई है, राइट? जब तक वो स्क्रिप्ट्स रखी हुई है तब तक हम उनको प्रोग्राम बोलेंगे. द टाइम वी एक्चुअली the time we actually start and executing them, right, then we call them as processes. जब भी हम उन प्रोग्राम्स को पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे, then we call them as process. Okay, so yeah, okay, so a program contain program file, data, CPU registers, stack and heap. Maybe we will discuss in our future lessons, right? Open files and process ID, right? This is okay, yeah. These are the kind of things, right, which a process contains in itself, right? Program code it is very necessary, right?
because if there was no code, no instruction written on the or stored on the disk, then which code or the which script does the operating system will understand that what I have to perform, right? Then the process ID is used as a process identifier. Okay, so now if we take an example, then Chrome, right? Chrome is a program. Whenever we double click it, it actually start executing, and then Chrome turns into the process because it is running. It isn't running right now. Okay, so you can open Chrome. Okay, here is a very good distinction, right? And you have to take care of this that uh, you can open Chrome 3 times, but whenever somebody asks with you, right, that let a person opens a Chrome 3 times, right? So what will be the number of programs and what will be the number of processes? So here the actual thing is that the program will remember, the process will create it means फाइल तो एक ही होगा ना, जिस फाइल के थ्रू हम उसको इनिशिएट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे किसी भी प्रोग्राम को, राइट? वो फाइल तो एक ही होगा, बट हम उसके थ्रू मल्टीपल प्रोसेसेस जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्रोम में यूट्यूब चला रहे हैं, एक में स्पॉटिफाई चला रहे हैं, एक में जीमेल ओपन करके रखा है, तो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस executing just using the one program, right? Same program and multiple processes. Now here is a bit distinction which is written as well, right? Program versus process. Program is static, means not running. Process is dynamic, means it is on its running state, right? When the program turns to the running state, it is known as process, right? Then program is stored on disk and process is stored on RAM. And okay, it is in passive state and process is in its active state always. Program has no program ID or process ID, right? But process has process ID, because अगर हम एक एक करके प्रोग्राम की ऐसा प्रोसेस आईडी रखने लगेंगे, प्रोग्राम आईडी रखने लगेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हो जाएंगे, राइट? मे बी हमको मतलब उस काम का नीड नहीं है, बट जो चीज एक्टिवली रनिंग स्टेट में है, राइट, हमको उसका टेक केयर करना पड़ेगा, राइट? एंड हेंस वी हैव प्रोसेस आईडी हियर. Then obviously program doesn't exist as it is static and it is in a passive state and execute instructions, process execute instruction as it is in its active state and it is dynamic. Okay, so firstly tell me, did you got the distinction between the program and the processes? Okay, now we have few practicals, right, which we have to perform so that we can actually yes. Okay, so what is our first program? Show the running processes. You can use PS to list down all the running process, right? So let's do it. I don't think so. It is working. Okay, right now I don't have a lot more running processes, right? I have only three processes which are right now running, which is having process ID 14,169 and then 2,997, 2,996, right? These are the three processes which are currently running, right? And the command which is used is sudo zsh, it is my shell, and it is ps for processes. So then we have, if we want a detailed list about them, then we can use ps -ef. Okay, here is a detailed list about my whole processes, right? Okay, we have already understand about these parameters in our earlier classes, right? Here you can see that few of the commands are running by the root user and some of them are running by the Kali, which is my sudo user, right? As I take login using my sudo user right, instead of root. So this approx कितना time, maybe आज शायद जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, राइट? हाफ एन आवर maybe.
half an hour makes 45 minutes. Okay. Did you want to go somewhere? Did you have some work? Okay, so these and these are the process IDs, right? And yeah, okay, you can actually take a deep look on all these processes using PS-EF. Let me clear it. And then interactive view. Okay, we have already taken a look on top and desktop, right? Here we can actually get an interactive look on our processes, and we can actually means हम लोग इसको एक्टिव स्टेट्स में देख सकते हैं एक्टिव स्टेट में उस पर्टिकुलर टाइमलाइन पे क्या हो रहा है, राइट? ऑल्सो अगर हम देखें तो अगर हम टॉप की जगह एच टॉप यूज करें सो इट इज मोर इंटरेक्टिव देन द टॉप वन, राइट? टॉप से ज्यादा इंटरेक्टिव आपको ये लगेगा। बाकी इंटरेक्टिव से कोई मतलब नहीं है आपको, मेनली आप इन प्रोसेसेस के थ्रू आपको क्या नीड है उसके बेस पे आप इसमें से अगर इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए then it is well and good, otherwise nothing will come into your room. Okay, so now modern alternative which is best up. Okay, current shell process ID. What is the process ID of our current shell? Let's take a look on it. Echo $. So it's a process ID for our current shell. PS. Now, if you can take a look, then my shell is ZSH. Here it show the PS. Sorry. Here PS show me the process ID, which is 2009 and 97, and the same here, right? Because I'm using ZSH. ZSH is my shell type, and the process ID of the ZSH is 2009 and 97. Okay. Then we have find the PID of a process. Find the PID of a process. Okay. Big grip Firefox and PID of Firefox. Okay. या मैं फायरफॉक्स यहाँ पे इसलिए यूज किया था क्योंकि वो पर्टिकुलर हम प्रोग्राम के बेस पे हम यहाँ पे देखेंगे, राइट? सो अगर हमको किसी भी फाइंड द प्रोसेस आईडी, ओके, अगर हमको किसी भी प्रोसेस का प्रोसेस आईडी चाहिए, राइट, यूजिंग इट्स नेम, पर्टिकुलर नेम, राइट, तो हम उसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो पी ग्रेप एंड देन उस प्रोसेस का नाम लिखते हैं। चलो हम एक बार ट्राई करके देखिए। ओके, एच टॉप चालू है हमारे पास। सो पी ग्रेप एच टॉप, ओके, इट इज, यस इट इज सेम, राइट? यहाँ मेरे पास एच टॉप अभी करेंटली रनिंग प्रोग्राम है, मेरे पास प्रोसेस है, राइट? और मुझे चाहिए था एच टॉप का, मतलब मुझे पता था, मान लो कि मेरे को पहले पता था कि मेरे पास जो प्रोसेसर चल रहा है वो एच टॉप है, राइट? एच टॉप मेरे पास वर्क कर रहा है और मुझे उसका पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी चाहिए, राइट? तो आई विल जस्ट यूज pgrep एच टॉप, राइट? द प्रोग्राम नेम हियर which is 15,670. Okay, and then we have one more PIDOF maybe. Okay, it is installed. Yes, it will both work in the same way, right? Either PIDOF or pgrep, right? Pgrep. Okay, so now top running processes. कल PID. Okay, so अब हम थोड़ा इसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेंगे प्रोसेस आईडीज के ऊपर, मतलब प्रोसेसेस के ऊपर कि हम उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फर्स्टली यहाँ पे किल करना बताया है, right? How we can kill? We can use the process ID after kill, right, to stop any process, right? So firstly, let's, okay, we have that much processes running right now. I want to stop h stop, right? Because
It might be that it's too interactive, so it will take a lot of my RAM, right? As compared to other one, right? So what I want to stop it. So let you skill. My process ID is 15670. Okay, I have run that, right? Now take a look. So it's right now running. Why it shouldn't be? Let's use skill. I have 15. I think it's something happens to post and skill -9, and then what is stop? Okay, stop. PID. Okay, where it is 15670. Okay, 15670. 15670. Okay. Now I think ओके ना मतलब वहाँ मेरे को फोर्स स्किल करना पड़ा राइट यहाँ पे मेरे को स्किल -9 यहाँ पे फ्लैग है फोर्स स्किल के लिए राइट और यहाँ पे आपको पीआईडी इनपुट करना है जो भी आपको प्रोसेस को किल करना है राइट सो एक्चुअली में मेरे को यहाँ पे एच स्टॉप को बंद करने के लिए फोर्स फोर्स स्किल का यूज करना पड़ा ओके ओके देन if we want to kill by using name, then we can use it. For example, kill, and I want to stop top. Okay, so top is also stopped right now. Let's take a look on PS. Oh, that doesn't stop. I think that I need to use force in here as well. Okay, these all are stopped just by using force skill. Okay, first we clear it. Yes. Okay. Yeah, yeah, I have seen your message. Yeah, please. Okay, then we have unique. You can go. Okay. Then to terminate, kill all processes with a given data, right? Kill all kill all process underscore name. Okay, so to terminate or kill all the processes with a given name, right? We actually have to use kill all process name. It's actually I don't have a process with multiple names, so I am not using this command right now. Okay? Then to verify the termination, we can actually use this command, right? Using this, firstly, we have to use this command before terminating or before kill out command, and after then we have to use this command again so that we can actually take a look that whether our process is actually stopped or not, right? We can, I think that, okay, we can did it. Let's take one more. Let's just start top again. Okay, reset clear PS. Now we have top as well. Okay. So what we have to do is PS aux graph. Okay. PS AUX GREP graph. What do you have to graph? We have to graph top. Okay. Right now, this is its state. Okay. Now what we need to stop it. Here, what is the process ID? Process ID is 1,900. Sorry, 19,866. Okay. So 19,000. Oh, wait. So you have to use till 19,000.
Okay, 866. 866. Okay. Hope that you can see these process ID here as well. 19,866, right? Let me enter. Okay, it will always stop using the force. Now, this process has gone from here. Let's clear out our terminal. Okay. Now where we are to set the priority level. Okay. Now here it is the very important topic, right? Which maybe you suffer a lot about it. Sometimes whenever you have लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज राइट जब भी प्रोसेस के बीच में फाइट होता है अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफर करने के लिए यूज करने के लिए सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस के हम लोगों को कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसको हमको प्रायोरिटी देना पड़ती है राइट क्योंकि अगर हम उनको प्रायोरिटी नहीं देंगे तो मे बी वो जो प्रोसेस है वो नीचे रह जाए सो फॉर दैट purpose to give them priority we have to set their priority level right here we use a nice tool right to to define the priority for them. Nice hyphen and value command. Okay, so here this is a basic syntax, right? Firstly, you have to use nice, then hyphen and then the value means it is the value of the priority level which you wanted to give it, right? And then the command to which command, right? For example, nice, right? Hyphen and then I wanted to give it the priority level of 10 and then I have the program Python 3 and the command is script.py, right? This is the way you can actually set out the priority level. And if you want to check out the nice values, right? Then of any running program, right? Then you can use this command ps-o pid comma ni and comes. Okay, let's use it. Actually, let's down all this. Okay, we have zsh sudo and ps sorry so then ps hyphen o ps hyphen o and then after that pid hyphen ni pid comma ni comma po double m wait, I have done something wrong. Okay, you have ps hyphen o. Okay, just let me start this program. Okay, this I've started to chrome. Okay, so now let me what happens here? Okay. Unknown user defined format comes. Okay, comes is not okay. I have to use comma. Okay. Yes. Now it will work. So what I did, I stop this, stop please, then stop this. Okay. So what actually happens here? Right, I asked PS to give me the more structured way, right? Here I list the three variables, the PID, the NI, and the comes, right? Com stands for the command, NI actually represent the nice number, right? And then we give it, and then it lists out the process ID, right? These are the three parameters which we need, the process ID and the nice number and the command. So they all have uh, then nice value of 0, right? Means actually, yeah, here we will understand that and lower the nice value, higher the CPU priority is. Okay, just wait, we will come to this topic. If you wanted to change the nice value of existing process, then we have to use renice, then nice value hyphen p and the process ID. Let does that over time. Okay. Firstly, we have to start top. Okay, we have top, and then also let's start stop as well.
control product side, that clear and use this ID. Okay. Now we have htop, top, zsh, sudo, and ph all running at the same time with the same priority level of 0. Now for us, for right now, we need not htop and top, right? अगर हमको बाई चांस sudo को zsh को अगर शेल को ज्यादा मेमोरी चाहिए तो हम चाहते हैं कि भाई वो ले ले, राइट? बट अगर ये लोग सब सेम प्रायोरिटी लेवल पे रहेंगे तो जिस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा उस टाइम पे ये सब के सब एक दूसरे को मतलब आप कह सकते हो ये लोग बराबरी से लड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम टॉप एंड एच टॉप का जो यहाँ पे पी आई डी है, राइट, यानी जो नाइस वैल्यू है, नॉट पी आई डी, नाइस वैल्यू जो है हम उसको डिक्रीज करेंगे। हायर द नाइस वैल्यू, लोअर द प्रायोरिटी विल बी। ओके, so what we have to use, we have to use renice nice value hyphen p and process id. Okay, so firstly use renice. What is our, what will be the value which we wanted to give? Okay, let's take it 10, and then hyphen p and the process id, hyphen p and our 2361. This is the process id. Okay, now you can take a look that old priority is 0, new priority is 10. Okay, we have to do the same for one more, right? Which is 2426. Okay, let's change the level to 5. Now the old priority level was 0 and the new priority level was 5. If we take a combined look on them, then now you can take this, हमारा जो nice value है वो 10 हो चुका है, and जो एक और extra का जो nice value है वो 5 हो चुका है. So okay, नाउ अब क्या होगा, जब भी रिसोर्सेस, अगर मान लीजिए कि ये सब रिसोर्सेस के लिए हमारे मशीन के पास रिसोर्सेस कम है, तो जब भी ये फाइट करेंगे, मतलब जो प्रोसेसर है वो बीच में फाइट करेंगे कि नहीं हमको सीपीयू चाहिए, हमको सीपीयू चाहिए, उस टाइम पे सबसे पहले सीपीयू दिया जाएगा सूडो zsh एंड ps को, क्योंकि इनका जो नाइस वैल्यू है वो सबसे कम है। उसके बाद जब हम ऊपर आएंगे, देन जो क्या कहते हैं, जो सीपीयू टाइम दिया जाएगा देन वो दिया जाएगा एच टॉप। एंड आफ्टर दैट जब हम थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, तो मतलब जब थोड़ा सा और फाइट होगा तो जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा टॉप, राइट? सबसे लास्ट जो प्रायोरिटी है वो टॉप की रहेगी। ओके, सो lower the nice value, now we are here, right? Lower the just so yeah, lower the nice value, higher the CPU priority will be, right? Lower the nice value, higher the CPU priority will be. जितना कम नाइस वैल्यू होगा उतना ज्यादा ही सीपीयू का जो प्रायोरिटी होगा, राइट? इसका जो नाइस वैल्यू की जो रेंज है वो है -22, राइट? दिस इज द बेसिक रेंज ऑफ नाइस वैल्यू, राइट? आप -20 को से लेके 10 तक 19 तक का वैल्यू प्रोवाइड करा सकते। ओके, now we are moving to our second section, which is PCB, process control block. Okay, so PCB is a kernel data structure that stores all information about a process. So जितना भी इंफॉर्मेशन होता है प्रोसेस के रिगार्डिंग वो सब पीसीबी स्टोर करके रखता है, राइट? पीसीबी इज अ कर्नल डाटा स्ट्रक्चर, कर्नल के अंदर डाटा स्ट्रक्चर होता है, राइट? वहां पे जितना भी इंफॉर्मेशन होता है प्रोसेस के बारे में वो स्टोर होता है। विदाउट पीसीबी द ओएस कैन नॉट मैनेज अ प्रोसेस, क्योंकि जब कोई डाटा रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो ओएस एक्चुअली क्या चीज को रिलेट करके वो उसको मैनेज करेगा, राइट? ओएस नीड्स डाटा टू मैनेज एनीथिंग। So actually the things which here which the process contains, right? These things are stored in PCB. The process ID, processor state, program counter, CPU registers, scheduling informations, memory informations, open files, permissions, and the parent processes, right? PPID. And these all things are managed by or stored in PCB, right? These all are regarding to processor. These are the information regarding to each and every processes which are stored in PCB or process control block.
अगर हम एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेके देखें तो आप पीसीबी को एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फाइल की तरह समझ सकते हैं, राइट? जो कि स्टोर करता है स्कूल की, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा होता है, जो भी नीडेड होता है, राइट, उसको मैनेज करता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर थर्ड सेक्शन व्हिच इज प्रोसेस लाइफ साइकिल। A process change states while executing. जब भी एक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स होके होते हुए जाता है, राइट? एंड हियर इन द स्टेट सेक्शन यू कैन टेक अ लुक दैट फर्स्टली हमारे पास जब भी कोई प्रोसेस नया स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो न्यू स्टेट में होता है, राइट? आफ्टर दैट न्यू स्टेट इट कम्स टू द रेडी स्टेट एंड देन एट द रनिंग स्टेट। एकदम से कोई भी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना चालू नहीं होता, सबसे पहले उसका रजिस्ट्री होती है न्यू काउंटर, न्यू स्टेट में, देन वो जाता है रेडी स्टेट में एंड देन इट विल गो इनटू द रनिंग। आफ्टर रनिंग, based on the task or based on the task and based on resource management, right? यहाँ पे जितना भी it will decide that whether it have to wait or it have to terminate after completing the task, right? मतलब अगर टास्क कंप्लीट हो गया है तो वो एब्सोल्युटली जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर रनिंग। बट अगर उसको किसी चीज के इनपुट की जरूरत है या फिर किसी तरीके का रिसोर्स की जरूरत है तो वो सबसे पहले वेट करेगा एंड देन जब उसको इसका डिजायर्ड चीज मिल जाएगा देन वो रेडी होकर अगेन रनिंग स्टेट में पहुंच जाएगा, राइट? एंड आफ्टर द टास्क विल कंप्लीट, वो टर्मिनेट हो जाएगा जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, राइट? So these are about the process life cycle, right? Here, when a process is created, it is in its new state. When waiting for CPU, it is in the ready state, right? Just like the yellow light at the uh, traffic light, right? Then it will in its running state when it will executing currently, right, at that time. Then waiting, okay, it will in the waiting or the blocked state, right? Whenever it need a disk or a keyboard input or network files or any kind of resource, right? In waiting state, CPU is not yet used. It is the very most important part here, right? That whenever the process is in its waiting state, right, it will not use CPU. Okay, so then this is the last state, which is terminated when the execution is finished and the process is stopped. Okay, now here is the example. Whenever you run a Firefox will move to firstly run a new state, then ready state, then running, then waiting for web page to be downloaded on the particular Chrome or the uh, search engine, right? And after that, it will ready, then running, then terminated, right? This is the basic life cycle on just based on you start Firefox. Now we will move to our session number 4, which is scheduling, right? We just take an overview of it. So scheduling is a process of deciding which process gets the CPU time. कौन सा process CPU time लेगा, right? कौन सा process next CPU को consume करेगा? It will decided by the scheduling, right? It is performed by the CPU scheduler. मतलब CPU scheduler होता है जो कि decide करता है कि अब next CPU किस task को या किस process को जाना चाहिए, right? अच्छा, ये नीडेड क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो सीपीयू है डिवाइस पे वो लिमिटेड होता है, राइट? इट्स नॉट अनलिमिटेड, इट्स वेरी लिमिटेड. So many process continuously compete for it, and hence we need scheduling or a CPU scheduler so that we can actually uh, work with the priority processes, right? And our system will manage all these things, right? And the scheduler decides the execution order, right? जो scheduler होता है, right, वही execution order decide करता है. तो इसका गोल क्या है? ये CPU यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करता है, जहाँ पे यूज होना चाहिए वहां पे जाता है. फेयरनेस होता है, जो प्रोसेस हमको चाहिए, जिस प्रोसेस को एक्चुअल में चाहिए पर्टिकुलर रिसोर्स ऑफ द सीपीयू, राइट, वहाँ पे सीपीयू शेड्यूलर वर्क करता है. देन वी नीड okay, it will provide a fast response, then a high throughput, right? Throughput is the you can say
fundamental amount of work done, right? And then we have low waiting time. Okay. So common scheduling algorithm. Okay, these are the five common scheduling algorithm, right? We don't have to study about them deep, but we just know the name of all of these, right? First we have FCFS, which is first come first serve, right? Then we have SJF, which is shortest job first. Then we have round robin, and we have priority scheduling, and then we have multi-level queuing. Okay, these are the basic uh, common scheduling algorithm, right? Which is used with our operating system. Okay. Now then we have a context switching, also one of the most important topic, right? Context switching is the process of saving one process states and loading another process state. If you take a look, then we are continuing using a flow. Firstly, here we understand that uh, where this process information about the process will store. So it will store on the PCB. Then we take a look on that how many states are there of a process. Then we learn about scheduling, that which process will get the CPU or the CPU time, right? Now we are learning about the context switch, right, which is the process of saving one process state and loading the another process state, right? जब भी हमको मतलब जो कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब हमारा जो सीपीयू, राइट, इसमें एक चीज होता है कि ये एक ऐसा नहीं करता कि ये एक ही प्रोसेस को स्टार्ट करे एंड उसको खत्म करने के बाद ही स्टॉप करे, नहीं। ये क्या करता है, जो सीपीयू टाइम है उसको बराबर दूसरे प्रोसेसेस के लिए भी शेयर करता रहता है। ऐसा क्यों है कि मतलब अगर हम इसमें क्या करता है कि अगर ये सबसे पहले एक ही प्रोसेस को खत्म करे सीपीयू, राइट, तो जो दूसरा प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। सो व्हाट इट डज, इट विल एक्चुअली ब्रेक आउट द सीपीयू टाइम, राइट। ये सीपीयू टाइम डिसाइड करता है कि प्रोसेस ए को थोड़ा मिल गया, देन प्रोसेस बी को थोड़ा मिल गया, देन प्रोसेस सी को थोड़ा मिल गया, देन अगेन प्रोसेस ए को मिल गया। तो ये क्या, ये मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव शेड्यूलिंग करता रहता है, राइट। एंड तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव शेड्यूलिंग में कंटेक्स्ट स्विचिंग का क्या काम होता है कि ये फर्स्ट प्रोसेस का स्टेट सबसे पहले सेव करता है कि फर्स्ट प्रोसेस को हमको एक्चुअली में कहाँ पे स्टॉप करना है, एंड देन जो अनदर प्रोसेस का जो स्टेट होता है उसको लोड करता है, सो दैट जब भी हमारा जो शेड्यूलर है वो घूम फिर के दोबारा हमारे फर्स्ट इनिशियल प्रोसेस पे आए तो उसको पता हो कि हमने प्रोसेस कहाँ पे स्टॉप किया था, राइट। Okay, so this is all about this is about the context switching, right? Why? Because CPU can execute only one process per core at a time. Per core पे वो एक ही process at a time use कर सकता है, right? So it actually switch between all the processes. Uh, okay, then the OS rapidly switch between the processes, which I said, right? जो अभी मैं बोला था वो यही लाइन लिखा है कि जो operating system है वो process के बीच में switch करता रहता है। Steps, for example, running process है, then save registers with PCB, right? registers में मान लीजिए प्रोसेस ए अभी रनिंग हो रहा है, then अभी क्या होगा कि जो पीसीबी के अंदर इस प्रोसेस ए का जितना भी स्टेट है वो सेव हो जाएगा कि प्रोसेस ए में क्या करूँ, राइट। then it will load process B, run process B, and then after running process B it will save into the register that where B it will actually stops the process number B, right, into the PCB. Okay. Then okay, so yes, this is the basic steps, right, of a context switching. Then we have okay, how many things that the context include, right? It include registers, program counter, stack pointer, and CPU flag. And these are the kind of things, right, which context include: CPU flag, stack pointer, program counter, and the registers. Okay. Now, इसका कुछ drawback भी है, right? Context switching is overhead. No useful work is done during switching. कोई switching के टाइम पे कोई भी जो यूजफुल काम है वो नहीं होता, राइट। और बहुत ज्यादा स्विच होने के कारण हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है, राइट। सो ऑब्जर्व context switch. Can we does it? Let's take a look if we can do it. Actually, I haven't tried, right? VM STAT1. Okay.
यस, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ बीच बीच में कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है, राइट। यहाँ इंफॉर्मेशन जो है वो बार बार स्टोर होती जा रही है, राइट। और तो हमको अभी इतना ज़्यादा डीप लुक लेना नहीं होगा, you can use it, right? VM as right, VM start and then it show the context switch per second पे जो context switch हो रहा है हमको ये इसके थ्रू प्रोवाइड होगा। Okay, now then we move to our next section, which is thread. A thread is the smallest unit of CPU execution, right? CPU execution का जो smallest unit होता है उसको हम कहते हैं thread, right? Inside a process के अंदर। So a process may contain one or multiple threads, right? क्योंकि it is just the smallest unit, just in our body, as same as we have cell in our body, right? It has the smallest unit as threads. Okay. अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास एक सिंगल थ्रेड रन होगा तो क्या होगा, प्रोसेस टू थ्रेड। बट जो भी हम कहते हैं मल्टी कोर मल्टी थ्रेड सीपीयू, राइट, उसमें क्या होता है एक प्रोसेस, उसके पास 4 थ्रेड्स, तो वो जो प्रोसेस है वो 4 अलग अलग वे पे मतलब स्पीड में रन हो सकता है। ओके, यस, सो देन वी हैव थ्रेड शेयर, राइट। जो थ्रेड क्या क्या शेयर करता है, कोड शेयर करता है, वो हीप शेयर करता है, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड द ओपन फाइल्स। और ओके, ये जो चीज़ है, राइट, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंटेनर बना हुआ है, राइट। तो ये प्रोसेस के बारे में जो कोड थ्रेड जो है वो क्या क्या शेयर करता है, एक तो आप ऐसे मान सकते हैं यहाँ पे कंटेनर बना हुआ है, राइट। पर्टिकुलर एक कंटेनर बना हुआ है, उस कंटेनर में से जो थ्रेड्स है, जैसे थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4, राइट, ये सब क्या करेंगे, उस कंटेनर में से ही प्रोसेस का कोड निकालेंगे, हीप निकालेंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स जो उस कंटेनर में रखे हुए हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस के या उस प्रोग्राम के बारे में, एंड ओपन फाइल्स, राइट। ये जो चीजें ये उस पर्टिकुलर कंटेनर में से जो थ्रेड्स हैं वो यूज करेंगे। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थ्रेड्स के पास खुद की होती है, राइट। फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स, स्टैक एंड द प्रोग्राम काउंटर, दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच रजिस्टर डोंट यूज टू शेयर एंड दे हैव देयर ओन, राइट। सो इसका थ्रेड्स का बेनिफिट्स क्या है कि एग्जीक्यूशन फास्टर होता है, राइट। फास्ट एग्जीक्यूशन मिलता है हमको, बेटर रिस्पॉन्सिवनेस मिलता है, पैरेललिज्म मिलता है, एंड देन लोअर ओवरहेड देन प्रोसेसेस। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक ही प्रोसेस आप कह सकते हो अलग अलग फ्रंट पे फाइट कर रहा है प्रोसेस, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, राइट। ओके, होप दैट इट विल क्लियर टू यू ऑल। सो यस, हियर इज एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्रोम, राइट। अब जब हम क्रोम को रन करेंगे, राइट, तो उसके बीच में हमको बहुत सारी चीजें चाहिए। तो थ्रेड क्या करता है, एक यूआई थ्रेड ने यूआई पकड़ लिया, राइट, एंड देन रेंडरिंग थ्रेड ने रेंडरिंग का काम पकड़ लिया, नेटवर्क थ्रेड ने नेटवर्किंग का काम, ऑडियो थ्रेड ने जो ऑडियो आ रहा है उसका, एंड जितना भी ग्राफिकल बेस्ड काम है वो जीपीयू थ्रेड ने पकड़ लिया, राइट। सो दैट्स हाउ एक्चुअली, मतलब अब कहते हैं ना टीम वर्क होता है, राइट, सेम हियर, राइट। टीम वर्क ही ये लोग भी करते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस को डिफाइन कर करके, छोटे छोटे पार्ट्स को, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस को और भी सब प्रोसेस में तोड़ ताड़ के, एंड देन ये लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, सेम लाइक दैट। वही बन के एक प्रोसेस बनता है, एंड देन प्रोसेस से हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम नॉर्मली भी देखें तो कोई भी ऐसा टीम या ऐसी चीज नहीं हो सकती जहाँ पे ये मेथडोलॉजी यूज ना हो, राइट। हर प्लेयर को, हर पर्सन को अपना अपना एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, राइट, पर्टिकुलर स्टेप। सो अगर हमको थ्रेड्स देखना है, सो व्हाट वी कैन यूज, वी कैन एक्चुअली यूज ps-elf और top-h. Okay, we are firstly using ph-elf. Firstly here is ps-elf. Okay, so these are the particular threads by बहुत सारे हैं, right? हम कर नहीं सकते, just wait. Okay, ठीक है, बहुत सारे थ्रेड्स हैं यहाँ पे, हम इनके बारे में एक एक के बारे में इंफॉर्मेशन लेने नहीं चाहेंगे, राइट। बट जस्ट आई गिव यू एग्जांपल, लाइक आप इसको यूज करके ये चीज देख सकते हैं। एंड देन वी हैव top-h. The top-h. Yeah. So this will give you actually a best interactive view about the threads, also the live checking, right। आप यहाँ पे लाइव चेकिंग थ्रेड्स के बारे में ले सकते, लाइव रिजल्ट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके,
And using this, you can only take up basic results, and using top-h, you can get the live results. Okay, now we have multitasking, and then yes, okay, only our two topics are remaining. So multitasking. Multitasking is the ability of our operating system to run multiple processes seemingly at the same time. It is just like मतलब जो इसका रियल मीनिंग होता है वही यहाँ पे भी राइट मल्टीटास्क मतलब बहुत सारे टास्क एक ही टाइम पे परफॉर्म करना राइट multitasking is the ability of operating system to run multiple processes simultaneously at the same time. So इसका रियलिटी सिंगल कोर अगर हमारे पास सिंगल कोर सीपीयू राइट तो क्या होगा टास्क वन पहले कंप्लीट होगा क्योंकि एक कोर एक ही बार में एक ही टास्क को कंप्लीट करता है तो सबसे पहले हमारा टास्क वन कंप्लीट होगा देन हमारा टास्क टू देन टास्क सी देन टास्क ए राइट एंड देन टास्क सी राइट मतलब ये आप देखो ये एक साइकिल चल रहा है राइट एक एक करके सिंगल कोर सीपीयू की दिस हैपेंस सो फास्ट राइट मतलब ये जो चीजें बहुत फास्ट होता है जैसे मैं आपको ऊपर बताया था राइट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी यहाँ पे काम करता है राइट मतलब ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो मतलब यूजर इसको एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं कर पाता कि ये इतना इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है राइट if we have a multi-core CPU then what happens then one core will handle the Chrome another core will handle the VS code then core number 3 will handle music and then another one will handle terminal right मतलब आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है right provide parallel execution right this is the most important line here right multitasking to provide parallel execution okay so then there are two kinds of multitasking first is preemptive multitasking and the another one is cooperative multitasking. Preemptive multitasking is when OS interrupts process automatically. For example, Linux में, Windows में और Mac OS में आपको देखने को मिलेगा कि जो process है वो OS interrupt कर देता है खुद से, right? While the cooperative multitasking is whenever the process voluntarily gives up CPU. Old operating system use this. ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करा जाता था कि जो प्रोसेस है वो वॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री बेस पे वो सीपीयू को छोड़ देता है एक्सपेरिमेंट हमारे पास है टॉप का बट हम इसको ज्यादा डीप में नहीं जाने जाएंगे क्योंकि इसमें हमको थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि हमको एनालिसिस करना पड़ेगा तो मैं भी हमारा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा ओके and you can actually use top for this okay and maybe you can also use h top as well so now we are moving to the last section of our chapter right which is section number 8 inter-process communication IPC. Here we will only understand about its concept, right? Not deep study about it. Okay. So processes are isolated for security and stability. One process shouldn't be shared data with the another process. क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों ही नहीं रहेंगी ओके तो समटाइम दे मस्ट एक्सचेंज डाटा कभी कभार एक्सचेंज करना पड़ता है डाटा को देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि जो प्रोसेस है ना वो सब आइसोलेटेड रहती है एक दूसरे से कोई भी प्रोसेस एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी चीज नहीं करता राइट वो थ्रेड्स होते थे जो कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस की ही इंफॉर्मेशन शेयर करते थे राइट बट प्रोसेसेस जो है वो कभी भी चीजों को शेयर नहीं करते हैं पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो आइसोलेटेड रहता है ओके सो समटाइम्स अभी कुछ कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिनको डाटा एक्सचेंज का मतलब यूज करना पड़ता है सो आई व्हाट आईपीसी डज आईपीसी comes here and plays a role of provide mechanism for the communication between the processes right जितने भी प्रोसेस हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए एक मैकेनिज्म आप कह सकते हो प्रोवाइड करता है कौन आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन तो उसके नाम से ही पता चलता है फॉर एग्जांपल ब्राउजर है और जीपीयू प्रोसेस है and then we have Spotify audio process, web server, databases. These are the kinds के जिनको बीच में डाटा शेयर का जरूरत पड़ता है. So what will they will actually need? They will actually use IPC inter-process communication. Without inter-process communication, process cannot share data or coordinate task. Process जो है वो डाटा को शेयर नहीं कर पाते and coordinate नहीं कर पाएंगे कि for example
अब मान लीजिए को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ था और दूसरा उसको शेयर ही नहीं कर रहा है तो वो काम नहीं कर पाएगा. Now here is one more topic which is message passing, right? So process exchange message through the operating system. For example, process A, OS, and process B. मतलब एक तरीके से यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो जो ये इनका जो वर्ड लिखा है वो उसी के बेस पे इसका मीनिंग, राइट? जो प्रोसेस है वो एक्सचेंज करता है मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस ए है तो वो अपना एक मैसेज देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड देन प्रोसेस बी, देन मूव इट विल मूव टू द प्रोसेस बी. Characteristic: it is safe, easy to manage, no shared memory required, कोई भी shared memory यहाँ पे required नहीं होता, and likely slower due to OS involvement. थोड़ा सा slower ये होता है क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है. देखिए आप जितनी भी ज़्यादा चीज़ों को ऐड करते जाएंगे आपको उतना ज़्यादा मे बी मूवमेंट में मतलब आपको स्पीड के साथ और लेटेंसी में भी आपको फेस करना पड़ रहा है जितने भी ज़्यादा आप एडवांस चीज़ें करते जाएंगे. रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, राइट? एंड देन माइक्रो सर्विसेज एंड चैट applications, right? All of these follow this, right? Message passing. Then we have a shared memory concept. The OS creates a memory region accessible by multiple processes. जो OS है वो एक पर्टिकुलर पूल बना देता है, मेमोरी पूल बना देता है और मेमोरी रीजन क्रिएट कर देता है जो कि मल्टीपल प्रोसेसेस के मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो उसको एक्चुअली में एक्सेस कर सकते हैं. अब अगर हम देखें, राइट, तो मे बी ये जो शेयर्ड मेमोरी है यहाँ पे इतना ज़्यादा सेंसिटिव डाटा नहीं होता, राइट? जो डाटा सब कुछ, फॉर एग्जांपल कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि दोनों प्रोसेसेस को नीड है. So what it will does, it will actually put them into this shared memory section, and from this shared memory section, process A and process B both will take their needed variables or the information or the data, right? What is its characteristic? It is very fast, high performance. It will provide a high performance, right? Process directly read and write memory and requires synchronization, right? To avoid data corruption. Data corruption से बचने के लिए हमको synchronization की जरूरत पड़ता है. Okay. So इसको अगर हम real world example देखें तो video streaming, image processing, high performance database, and AI applications exchanging large tensor. These are the real world applications of our shared memory concept. Then we have a difference between a share message passing between the shared and the shared memory. So message passing is actually use OS to transfer data. Shared passing shared passing shares same amount of memory region, right? It is simpler, it is more complex, right? And it is safer, it is fast. Shared memory is fast, right? Because every process can take their needed information from a pool. But here in the message passing, firstly it will be taken care by the process one, then it will move to process two. So it is just one by one process. Okay. Okay. Then it has higher overhead and it has lower overhead क्योंकि इसको जो है वो इंफॉर्मेशन पास करना पड़ता है प्रोसेस टू प्रोसेस, इसको वो काम नहीं करना पड़ता. And then best for distributed connection communication and best for high speed local communication. Okay. Now अगर हम देखें तो यहाँ पे these are actually the commands जो कि हम यूज कर चुके हैं पहले. PS रनिंग प्रोसेस को यूज करने के लिए, PS-EF डिटेल प्रोसेस लिस्ट करने के लिए, then top, then stop, E को $$ so that we can take a look on that our shells process ID. And then we have VM state 1 and then PS-ELF and top H. This is the command summary, right? All the commands which we have studied in our chapter. So we are at the ending of our chapter number 3, process and threads, right? Here is just a bit summary, right? What is program? It is a static executable file on the disk.
process running instance of a program in the memory. PCB kernel structure storing all process information. Then we have life cycle, which is new. Means the process starts from new to ready, then running, then waiting, ready, terminate. Right. This is the basic life cycle of a process. Then scheduler decides which process gets CPU. Context switching save one process state and restore another. थ्रेड जो है वो स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन यूनिट होता है within a process. Multitasking allow multiple tasks to share CPU time efficiently, and IPC enables isolated processes to exchange data using mechanisms like message passing and shared memory. So guys, this is all about our chapter number 3, which is process and the threads, right? Hope you all will got on this is chapter number 3. Now we'll move to we will meet in the next class, which is chapter number 4.